afternoon, ladies and gentlemen. While we are waiting for our chief guest, Honorable President of India, to arrive, allow me to take a few minutes to introduce her to you. Srimati Draupadi Murmu was sworn in as the 15th President of India on 25th of July 2022. She had served as the Governor of Jharkhand from 2015 to 2021. She has also served as the Minister of State, Department of Commerce and Transport, and as Minister of State, Department of Fisheries and Animal Resource Development in the government of Orissa. She was awarded the Pandit Neelkant Das Best Legislator Award in 2007 for her admirable works in administration and tribal education. From introducing reforms in examination and recruitment processes in the state universities to upholding rights of tribal communities, she has received wide appreciation. Ma'am is highly revered for her statesmanship and adherence to democratic ethos.
I request everyone to rise. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. The national anthem will now be played. On behalf of Sardar Vallabhabhai Patel, National Police Academy, I, Anjali Vishwakarma, IPS probationer of 74 RR, consider it my highest honor to welcome our chief guest, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. I also extend my warm welcome to the Honorable Governor of Telangana, Srimati Tamilisai Soundarajan, to the Minister for Women and Child Welfare and Tribal Welfare of Telangana State, Srimati Satyavati Rathore, the Director of Sardar Vallabhabhai Patel National Police Academy, Shri A.S. Rajan, respected faculty members, my colleagues in the Indian Police Service, officers from friendly foreign countries, from Nepal, Bhutan, Maldives and Mauritius, ladies and gentlemen, thank you for being here today. I request the Director of the Academy, Shri A.S. Rajan, to kindly deliver the welcome address. Be the change that you wish to see in the world. If the father of the nation, Mahatma Gandhi, immortalized these words, our Honorable President Madam is epitome of those words. I take immense pride and pleasure in greeting and welcoming our Honorable President Madam to the Sardar Vallabhabhai Patel National Police Academy today. We are indeed privileged and honored to have with us the Honorable President of our nation. On behalf of the Academy, I extend a very hearty welcome to your good self, Madam. My greetings to the Honorable Governor of Telangana State, Honorable Minister for Tribal Welfare of Telangana State, distinguished guests, my colleagues in the Academy, officer trainees of 74 batch of regular recruits of Indian Police Service, officers from friendly neighboring countries, Nepal, Bhutan, Mauritius, and Maldives. Good afternoon, ladies and gentlemen. Madam, seated before you are 195 officer trainees, including 29 foreign officers. They are undergoing basic training at the Academy. They have already completed 40 weeks of their training. The content and methodology of the training here at Sardar Vallabhabhai Patel
National Police Academy has been designed to keep pace with the dynamic requirements and emerging challenges of policing in the contemporary world. A smart, S-M-A-R-T, police force, according to the Prime Minister of India, is one that is strict and sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, tech-savvy and trained. And this is the goal and motto of this elite academy. Honorable Madam President, we have been striving hard to mold officers who are sensitive, responsive, tech-savvy and trained. Sincere efforts are being made to inculcate the highest standards of conduct, integrity and professionalism to the needs and aspirations of the people of India. I am confident that these alert, intelligent, trained, skilled and motivated officers will prove to be a national treasure. During the training, inputs were provided on various law and police-related subjects to these officers. A number of sensitization, orientation, and competency modules were also conducted to groom the officers to enforce law impartially in tune with the demands of democratic policing, inculcating empathy and sensitivity in a pluralistic society. For relating the classroom inputs to the ground reality, the trainee officers are deputed to field visits and attachments. They have undergone jungle survival and operation modules with greyhounds, training in advanced weapon at CWT indoor, rock climbing and river rafting with ITBP, correctional administration with jail attachments, attachments for observing elections and crowd management, coastal security module with Navy, Coast Guard and coastal police, and also media module to tackle the menace of misinformation and disinformation. They also had an attachment with Indian Army, where they visited forward posts in the Indo-Pak border in Leh, Jammu and Srinagar. These officers, in their new roles as leaders and decision makers of the police, are going to take India forward towards the 100th year of independence, 2047 and beyond. Once again, I welcome you, Honorable Madam President, to this historical institution which is alma mater for Indian Police Service officers. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I now request the Director, Shri S. Rajan, to felicitate Madam President and other dignitaries as a token of our gratitude and appreciation. Honorable Madam President, we have just completed 40 weeks of our training in the Indian Police Service.
It has been a rich learning experience for all of us, and we have strived every day to imbibe the foundational values of public service. Few of us would like to present our experiences before you. I call upon Rahul Goyal, fellow officer trainee of 74 RR, to share his thoughts. Honorable Ma'am President of India, and the dignitaries present on the dais. It is the highest honor and privilege to stand here and share my experience about our training. Ma'am, I come from a very small town in the district of Kalahandi, Odisha. Education was and still is a very distant dream for a lot of us. However, with God's blessing and guidance of parents, I cleared the UPSC exam and was allocated Indian Police Service. When I joined the service, I was excited and apprehensive at the same time regarding the training and the rigors of the academy. I remember the first time I ran 1 mile, I almost fainted at the end of the run. But the regular motivation and the sessions by our ustads enabled me to complete the triathlon event, which consisted of 1.5 kilometers swimming, 40 kilometers cycling, and 10 kilometer running at a stretch, and a half marathon in the last week itself, which was beyond my imagination in the first week. There is a Michelangelo statue just as we enter the academy. It says, "There is already a fine officer in you, help us chisel it out." Ma'am, with utmost confidence I can say that the academy lives up to this motto. The academy has made us test our limits in every sense and strived to make our mind free from fear and strong. Ma'am, I have seen and felt the presence of Naxal extremism near my home. While growing up, I have heard the civilian complaints against the security and the police forces. Today, while standing at the other side of the spectrum and gaining experience from the guidance of the greyhounds of Telangana state, I realize the challenges faced by the personnel on the field and understand the limitations. One of the renowned poets, Sant Kabi Bhima Bhoy of Odisha, has famously said that, "Mo jibana pache narke padi thau, jagata uddhara hou." It translates to, "Let the world be a better place, even if it needs me to sacrifice myself." Ma'am, this academy has not only trained me in policing, rather made me a more sensitized and capable human being. As we are in the last leg of our basic course training, it fills me with immense pride to be a part of this prestigious service, and I sincerely feel that every one of us present here shares the same feeling and will give their best in the service of the nation and carry some of the best memories from this academy. Jai Hind. Now, I would like to invite my fellow batchmate Subramanya Kelkar for sharing his experience. माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को अभिवादन। ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमें आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। आज मैं उस सेवा के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसका वर्तमान बहुत सेवादायी है और जिसका भविष्य बहुत आवश्यकतापूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक काल तक अंतर्गत सुरक्षा की नींव जिस सेवा ने संभाली है वो पुलिस सेवा है। यह एक ऐसी सेवा है जो भारत को एकात्मता और सुरक्षा से जोड़कर भारत में शांतता रखती है। महोदया, मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से आया हूं जो एक कृषि प्रधान गांव है, पर वहां पर भी लोगों की सेवा करते वक्त पुलिस को मैंने हर रोज देखा है और वहां पर लोगों के मन में पुलिस के बारे में जो सम्मान और विश्वास है, यही भारतीय पुलिस का यश है, ऐसा मैं कह सकता हूं। महोदया, यह अकादमी हमें गुरुकुल जैसी ही लगती है, जहां पर हमें इंडोर तथा आउटडोर ऐसा विशिष्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर विविध विषयों के साथ साथ समय व्यवस्थापन
अनुशासन, आत्मनिर्भरता ऐसे संस्कार हमें दिए जाते हैं, जिससे मेरे जैसे अनेक किसान पुत्रों को विद्यार्थी से अधिकारी बनाने में यह अकादमी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। महोदया, इस प्रशिक्षण से भारतीय व्यवस्था, भारतीय समाज तथा पुलिसिंग के बारे में हमारे विचारों में बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ है। यहाँ आने से पहले हम पुलिसिंग को एक फोर्स ऐसा मानते थे, पर यहाँ आने के बाद और यहाँ पढ़ाई करने के बाद हमें यह पता चला कि पुलिस एक फोर्स नहीं बल्कि एक सेवा है, जो हर दिन और हर वक्त देश की सेवा में जुटी रहती है। कोई गुनाह हो, कोई आपत्ति हो, कोई उत्सव हो या भीड़ नियंत्रण हो, पुलिस हमेशा वहाँ पर सेवा देने के लिए तत्पर रहती है। कोविड काल में भारतीय पुलिस का नैतिक और मानवीय चेहरा पूरे विश्व ने देखा है, जहाँ लोगों की सेवा करते वक्त 2000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया था। महोदया, हर एक पुलिस वर्दीधारी नागरिक होता है और हर एक नागरिक बिना वर्दी का पुलिस होता है। यह सामुदायिक पुलिसिंग यानी कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना भी हमें यहाँ अच्छी तरह से सिखाई गई है, जहाँ पर पुलिस और नागरिक साथ में मिलकर गुनाह का प्रतिबंधन करने में मदद करते हैं। परंतु अभी भी भारतीय पुलिसिंग के सामने बहुत चुनौतियाँ खड़ी हैं। पुलिसकर्मियों की कम संख्या, काम का ज़्यादा प्रेशर, साइबर क्राइम, ड्रग्स की समस्या, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, यही कुछ चुनौतियां भारतीय पुलिसिंग के सामने हैं। परंतु हमें ये विश्वास है कि इस अकादमी ने जो हमें प्रशिक्षण दिया है, उस प्रशिक्षण से आने वाले समय में इन चुनौतियों का सामना हम कर सकेंगे। महोदया, अनुभव कथन समाप्त करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है अपनी सेवा पर, और आने वाले समय में मैं और मेरे साथी अपनी सेवा का ये गौरव और सम्मान और भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं मेरी साथी नेपाल पुलिस की मिस अल्जेना राय को यहाँ अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, आज इस अवसर पर मेरे अनुभव को आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। माननीय राष्ट्रपति जी, कई दशकों से नेपाल पुलिस और भारतीय पुलिस के बीच समन्वय रहा है, जिसके कारण सन 1954 में नेपाल पुलिस सेवा से 2 पुलिस अधिकारियां आईपीएस प्रशिक्षण में भाग लेने आए। इसी तरह हम नेपाल के 5 चयनित पुलिस अधिकारी 28 मार्च 2022 को आईपीएस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आए और हमें यहाँ प्रशिक्षित हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, हर दिन अपराधी तकनीकी और विकास के साथ अपने अपराध प्रक्रियाओं को बदलता है, जो दुनिया भर में पुलिस की जांच में हमेशा चुनौतियां खड़ा करता है। जब दुनिया भर की पुलिस को एक साथ खड़ा होकर अपराध के खिलाफ लड़ना है, तो हमारे पड़ोसी देश भारत सदियों से हमारे मित्र रहा है और दोनों देशों में विविध सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंध रहा है। यही रिश्ते के साथ पुलिस की क्षमता बढ़ाने के लिए अपराध नियंत्रण और जांच में एक दूसरे की मदद करने के हेतु ये एक विशेष मंच है। अतीत में इस विशिष्ट मंच आईपीएस से स्नातक करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध नियंत्रण, जांच और सफल समन्वय के कारण मेरे देश की हर पुलिस अधिकारी इस मंच में भाग लेने के लिए उत्सुक है, लेकिन हम में से ही कुछ भाग्यशाली अधिकारियों को यह अवसर मिलता है। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं ये कह सकती हूँ कि हमने आपसी समन्वय और मौजूदा कानूनों के अनुपालन के माध्यम से एक दूसरे का साथ सहयोग और समन्वय किया है, जबकि हमारे दोनों देशों की खुली सीमाओं के कारण अपराधी सीमा पार छिप सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में किस तरह की समाज मौजूद है, अपराधों की प्रकृति क्या है, भविष्य में हमारे कानून लागू करने वालों के लिए क्या अवसर या चुनौतियां हैं, यहाँ बैठे विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारियों के भागीदारी से स्पष्ट होता है। आज की दुनिया में केवल एक व्यक्ति, एक संगठन या एक देश वैश्विक संदर्भ में अकेले अपराध के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। मैं अपनी विश्वास व्यक्त करती हूँ कि इस एकेडमी में दुनिया के उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त करने से हमें और हमारे आने वाले पीढ़ियों के
पीढ़ियों को सुरक्षित दुनिया बनाने में मदद मिलेगी। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी को इस सम्मानित सभा में मेरे कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और मैं ये आश्वासन देना चाहती हूं कि भविष्य में समन्वय और कानूनों की अनुपालन द्वारा अपराधों को रोकने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। I thank Rahul Goyal, K. Subramanya and Aljina Rai for sharing their learnings with us. Honorable Madam President, on behalf of everyone present here, I humbly request you to address the gathering, share your wisdom and inspire us to carry forward the values of righteousness, integrity and justice as we endeavor to perform our duties honorably. Please enlighten us with your words. Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Sundara Rajanji, State Minister Srimati Satyavati Ratharji, Director of Sardar Vallabhabhai Patel National Police Academy, Sri A.S. Sarajanji, Officer Trainees of the 74th batch of the Indian Police Service, Officer Trainees from Bhutan, Maldives, Mauritius and Nepal, distinguished faculty and officials of NPA, ladies and gentlemen. I convey my heartiest congratulations to all the officer trainees. You all deserve high praise for your merit, proven by your getting into the much respected services. I will cherish my memories of this visit to the National Police Academy named after Sardar Vallabhabhai Patel, whose very mention inspired every Indian. Nearly 12 years after independence, Dr. Rajendra Prasad had written, and I quote, that there is today in India to think and talk about is very largely due to Sardar Patel's statesmanship and firm administration. I end quote. I take this opportunity to re-emphasize on behalf of all fellow citizens our gratefulness to the Iron Man of India. This academy is also an outcome of his foresight. I am glad to note that your academy song conveys this sentiment. लोहे जैसा हिम्मत है, लोहे सा जज्बा अपना, आंखों में लिए चलते हैं हम, लौह पुरुष का सपना. If you remain steadfast to pursuing the dreams of Sardar Patel, you will definitely make immense contribution to the country and its people. I think it is important to remind young officers like you a famous statement of Sardar Patel. Appealing to the officers of newly independent India, he had said, and I quote, your predecessors were brought up in the traditions in which they kept themselves aloof from the common run of the people. It will be your bounden duty to treat the common man in India as your own, unquote. Ladies and gentlemen, this academy has been making great contribution for several decades by nurturing leaders for the Indian police. When the country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, the nation acknowledges the rich contribution of our police force in sustaining and strengthening the world's largest and most vibrant democracy. The Indian police has also made its huge contribution in preserving the unity of the country, which was shaped by Sardar Patel. Thousands of brave police personnel have laid down their lives for the cause of India's internal security. Their names are etched on the wall of valor at the National Police Memorial in New Delhi. I offer my humble salutation
to those valorous children of Bharat Mata. Paying respect to the brave hearts at Matthias column in this campus was a very touching experience to me. I once again salute the memory of the IPS officers who sacrificed their lives at the altar of duty. Dear IPS probationers, the burden of colonial past and feudal habits still affect many aspects of behavior and governance in our country. That is why liberation from the mindset of slavery for those who still retain it has been identified as one of the national priorities. Let us always remember the simple fact that the colonial powers developed policing systems based on consent and participation of citizens in their own countries. But they promoted policing based on the fear among citizens in colonies like India. Police is the most visible organ of the government. When the police force commands trust of the people, it enhances the image of the government. The police will command respect and trust only when the entire force under you to the last constable displays alertness, sensitivity, and honesty. Dear IPS probationers, right since the beginning of your career, you will be in leadership positions. The quality of your leadership will determine the effectiveness and morale of the force led by you. It will also touch countless lives. As the leaders of your force, you have to keep in mind and demonstrate through action the 5 fundamental attributes of integrity, impartiality, courage, competence, and sensitivity. The responsibility of prevention and detection of crime and upholding the rule of law is becoming more complex, dealing with terrorism, insurgency, militancy, ideology-driven violent extremism, communal violence, large networks of organized crime, and other threats to internal security requires high levels of motivations, skills, and perseverance. Cyber crimes and issues related to social media pose novel challenges. Technology-driven policing is needed to combat high-tech crimes. Police process have to be partners in progress of the country and transformation of the society. Police officers like you are going to play the roles of change agents in India's achieving greater prosperity while ensuring sustainable development, especially inclusion. By inclusion, I mean inclusion of that last person, the most deprived person, the most vulnerable person. That person should be at the center of your concerns. You should be sensitive to the plight of the voiceless. You have to ensure that an illiterate poor man living in a remote corner of the country gets sympathetic support at the local police post. Dear IPS probationers, Rashtrapita Mahatma Gandhi had written, and I quote, "My life has been an open book. I have no secret and I encourage no secrets," unquote. Transparency and friendliness demonstrated by police officers gets talked about among the people. It is said that the real worth of a person is determined by what he does when nobody is watching. Let me add to this and say that everything big or small that you do will come to be known to everyone.
Imagine that you are living in a glass house and let your life be like an open book. Try to fill the book of your life with your own stories of compassion, helping the underprivileged, earning the love and support of the people, yet being firm and decisive. Let the criminals tremble with fear at the very thoughts of the police, but at the same time, let the common citizen look at the police as a friend and savior. If your team discharges its duties well, approval and trust of all stakeholders will follow as natural consequences of your genuine efforts. At times, you may encounter challenges, even unfair adversaries. But I assure you that in the end, truth alone triumphs. Satyameva Jayate. I appeal to you to march ahead through the challenges of your career with a clear consequences, and I bless you with an illustrious future ahead. Dear IPS probationers, in line with our stated national priorities, Nari Shakti has to play a major role in achieving the targets we have set for ourselves during the Amrit Kal. A truly Atmanirbhar Bharat presupposes Atmanirbhar Nari. It is very rightly said that when you invest in a woman, the women invest in everyone else. It is heartening to note that women are demonstrating greater participation in our democratic process. The rising share of women voters has been one of the biggest achievements of the Indian democracy in recent times. The leadership pipeline of women has to become larger and stronger in every walk of life. Larger participation of women results in better overall development. I have been told that Scandinavia countries, women constitute nearly 30% of the police force. It is a fact worth highlighting that the Scandinavian countries having the largest average women representation in the police are also among the top-ranking countries in terms of human development indices. We should quickly move ahead from the phase of empowering women to the stage of women-led development. It is already happening in many fields. It must happen in a much bigger way. I must emphasize that women in leadership positions like the lady police officers sitting here should always help other women, especially the vulnerable. In fact, if every woman stand up for the weaker ones among them, the society will experience a great transformation. I am happy to note that gender-related inputs are integrated into your training modules. I am extremely delighted to know that for the last 3 successive benches of the IPS lady officers trainees have been recognized as the best probationers. Dear IPS probationers, crimes against women remain a blot on our society. Let us all resolve to bring about transformational changes. You have to ensure that a girl traveling alone at late nights feels safe. Everyone has to ensure that fellow citizens follow the fundamental duty of denouncing practices derogatory to the dignity of the women as stated in our Constitution. Before I conclude my speech in English, I like to say something in my mother tongue, in हिंदी। बच्चे मैं आज बहुत खुश हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को देख के
मुझे भी लगता है कि उनके ड्रेस को, उनके चेहरा को देख के मुझे लगता है भी मैं भी बहुत यंग हूँ। मैं शायद कायस मेरा शरीर तो झुक रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं भी स्टेज खड़ी हूँ। जो पुलिस ऑफिसर्स रास्ते पे जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, लगता है यस ये लोग समाज के ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुलिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं लोगों का हेल्प करने के लिए। मैं जो गर्ल्स को देखती हूँ मुझे लगता है काश मैं इस टाइम पे धरती पे आती। उन दिनों एक महिला पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स पेरेंट्स को और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी समाज के बुराइयों को, समाज के जितने चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो भी तैयार है। आज जो 3 ऑफिसर्स अपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ बताते थे, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। हर क्षेत्र में जहाँ क्राउडनेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, वहाँ पुलिस फोर्स जाते हैं और क्राउड को कंट्रोल करते हैं। आईन श्रृंखला उनके हाथों में है। आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, आईन के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन, लेकिन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बहुत अच्छी तरह वो बयान करते थे। सर्विस कहा जाता है सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। टाइम ऐसे टाइम में आप लोग आए हैं, अभी अमृत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने सर्विस में। जो ये देश अपना सेंटेनरी मनाएगा उसके बाद भी आप लोगों का सर्विस कायम रहेगा। इसीलिए आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का सेवा ऐसे होना चाहिए। ऑफिसर्स, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन युग में पदार्पण किए हैं। हम वो युग में नहीं है जहां उनको प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन कहा जाता था, क्योंकि शासन करने के लिए हम शासन नहीं, हम सेवा करते। बाएं हाथ में किताब के लॉ के नियमों के प्रावधान, दाएं हाथ में डंडा और एक पेन। कहा जाता है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। पेन चलाने के टाइम सोचना चाहिए, मैं जो आज जो चैलेंजेस मेरे सामने है, उस चैलेंजेस को किस तरह मैं बयां करूं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ये एकेडमी को। एक योग सेंटर भी यहाँ खोला है। 2 क्राउड या 2 पर्सन या जो कोई भी ऐसे जगह, तो वो तो टेंशन में रहते हैं, लेकिन हम शांति से, हम धैर्य से उसको टैकल करें। इसीलिए हम रिपोर्ट लिखने के पूर्व 50 बार सोचना चाहिए, मैं इस नोटबुक में या इस रिपोर्ट में क्या लिखूं, किस तरह लिखूं।
मैं जो छोटी थी उस टाइम तो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन उसका जो प्रभाव थोड़ा था। लोग कहते हैं, ये बच्चों को कहते हैं तुम जल्दी जल्दी सो जाओ, नहीं पुलिस आ जाएगा, ज़्यादा खाओ नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। कहीं कहीं ये मेंटालिटी अभी भी गांव-गांव में है, अभी भी दूर दराज में है। लोग डरते हैं अपने भाव को, अपने परेशानी को, और झेलते रहते हैं, कहीं इससे ज्यादा मैं परेशान ना सामना करूं। इसलिए कभी कभी मैंने देखा, मैं जब थी कि पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और नज़दीक करने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर बंधुत्व या मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसी चीज है जो एक के पत्थर को भी पिघल देता है। वो भावना होना चाहिए। ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, जो भी ऐसे काम किए ये मेरे हैं, ये भी मेरे हैं। मेरा जो लोग जो भी किए, कोई सी परिस्थिति में वे किए, उसको कैसे अपने अंदर में ही सॉल्व करे और ऊपर को जाने ना दे। जाने से फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोग फेस करेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने हाथ में ही ले लो। मैं देखती हूँ यहाँ जितने यंग ऑफिसर्स है, कहते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फलदार वृक्ष के तरह और झुकाव होते हैं, फलंती वृक्ष जैसे नमन्ति बुद्धे, जो ज्ञानी लोग होते हैं। इसीलिए आप अपने लोगों के लिए अब तो करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसी रास्ते को चुने, क्योंकि आप कर पाएंगे, मैं देखती हूँ आप करेंगे। आप जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे लगता है आप इसको हैंडल कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दूसरों से अलग, ये देश हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं, कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े नहीं। मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, ये सब मेरे हैं। ये मेरा काम है, मैं अपने से इसको सुलझाऊँ, वो आप कर पाएंगे। ये मॉडर्न युग है, कंप्यूटर युग है, साइंस युग है, आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप इनोवेटिव वाले हैं, इनोवेटिव आइडिया आपके पास है। कैसे हम करेंगे इसको टेकल, इट इज अप टू यू, आप कर पाएंगे। ऐसे दूर दराज से, ऐसे अनजान, ऐसे इलिटरेट लोगों को ऐसे ना हो कि मैं नहीं जाऊं। पुलिस वाला अभी भी है, पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई भी रास्ते पे आते, अरे उनके घर पे पुलिस वाला क्यों आए थे, अभी भी ये डर है। ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा? मुझे लगता है आप कर पाएंगे। और ये जो हम 247 नहीं, ठीक है, मैंने ठीक बोली ना? हाँ, इतने तक मुझे लगता है, और 25 साल है, इतने तक आप ये कर पाएंगे। और आपसे नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे वो लोग सीखेंगे, आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे आपसे सीखेंगे, मैंने सीनियर क्या कर रहे हैं, आप तो सीनियर बन जाएंगे। आगे जाके कोई डीजीपी बनेंगे, कोई कमिश्नर बनेंगे, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के हाथ में होगा। ये मेरा देश है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, कोई नीचा, कोई नीचे, कोई ऊपर वाला नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे लगता है वो हो पाएगा। ये रास्ता बहुत अच्छा है, जब नाम कमाएंगे
तो आज बहुत सारे लोग, एक दो का तो मैं याद है, बहुत लोग ना शायद नहीं बोल पाऊंगी, नहीं बोलूँगी। आप अपना आइडेंटिटी देश के लिए नाम रोशन कीजिए और अपना देश का आइडेंटिटी भी बनाओ कि हम देश में, अभी एक संस्था में गई थी, उन लोग बोलते हैं कि ये हम दूसरों से अलग है, हम कंपेरेबल नहीं है, अनकंपेरेबल, कोई किसी के साथ हम तुलनीय नहीं है, तुलना नहीं कर सकते, हम अलग हैं और अपनी तरह से हम हैंडल करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे। नुकसान होते हैं थोड़ा बहुत, क्यों होते हैं, क्यों तो आप जाइए, मुझे लगता है वहीं पे ही अलग बीजा है, सीड है, क्यों तो जाइए, मुझे लगता है, और क्यों को जब आप खत्म करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है आप वो कर पाएंगे। क्यों ये नुकसान है, मेरे भैया, मेरे ये लोग क्यों नुकसान हो रहे हैं? बाहर के लोगों के तो ये है, पुलिस प्रशासन भी है और मिलिट्री फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है वो तो है, सब मिल के करेंगे। लेकिन ये जो बहुत सारे चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि जोड़ तक जाइए और उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये आप कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है भारत का स्वाधीनता का, इंडिपेंडेंट का 100 साल बहुत अच्छा होगा। आपके लीडरशिप में, आपके अगुवाई में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, गांव में, दूर दराज में सब लोग खुशी से नाचेंगे और कोई किंतु, अंदर में कोई किंतु नहीं होगा। ये प्रश्न नहीं रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों से ज़रूर उम्मीद करता हूँ आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा ही है, साथ ही साथ देश का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Madam President. It is truly inspiring to hear you speak. I speak for everyone here when I say that this day and your speech has been etched in our minds forever. Ladies and gentlemen, the national anthem will now be played.
नहीं भाई, जैसे कोई पप्पू बोल दे तो उसको दिल पे लगाएगा ना? नहीं, वो प्रोपेगेंडा कैंपेन है, उसके दिल की बात है। उसको वो जो बोल रहा है, हाँ जी, उसके अंदर डर है, वो उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। थिंग इज योर